Hello, good evening. Good evening, ma'am. Yes, okay, Miraj is not here, but I think we should start. All right, so we completed exercise 13.6 in the last class. So we are going to start the new exercise today, which is about the volume of cone. So far we have studied the volume of different figures. We have completed cuboid, right? And then cube and cylinder. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. Cylinder. Okay, so the next is cone. So today we are going to study about the volume of the cone. Now, straight away formula भी याद कर सकते हैं, but I want to tell you that from where the formula has come. So first we will see one thing. हमने सिलेंडर को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, राइट? तो अगर हमने एक सिलेंडर लिया, लेट्स से वी हैव टेकन अ सिलेंडर. Yes, Mridula? Yes, ma'am. Okay, so this is the height of the cylinder from here to here, and this is the radius, like let's say r. Now, अब हम क्या करेंगे? Same radius का, like base radius होगा cone का. Cone because cone has a circular base. तो हमने same base radius r का एक cone लिया और उसकी height exactly like this is the height of the cylinder. So exactly this height हमने cone की भी ली, ठीक है? So they both have like height h and they both have the radius r. Now we want to know how much is the volume of the cone. We already know about the volume of the cylinder. So we can find it out with the help of an activity. Let's say हम क्या करेंगे? हम देखना चाहते हैं कि सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है. तो हमने कोन को किसी लिक्विड से फिल किया एंड देन लाइक पूरा फिल किया और हमने उसको सिलेंडर के अंदर डाला, ठीक है? तो ये वन टाइम में एग्जैक्टली वन थर्ड ऑफ द सिलेंडर ये फिल होगा इससे. अगर हम लेट्स से कि हमने कुछ इसके ऊपर मार्क्स लगाए हुए हैं सिलेंडर के ऊपर, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वन थर्ड पोर्शन फिल होगा. फिर हम एक और बार फिल करके डालेंगे तो इट विल बी लाइक टू थर्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर विल बी फिल्ड बाय द लिक्विड. और फिर हम 3 बार जब कोन को फिल करके डालेंगे तब एग्जैक्टली आपका पूरा सिलेंडर फिल हो पाएगा, राइट? सो दैट मीन्स अगर हम 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन लें तब आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर आएगा. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay, so you have to fill your cone 3 times. So then it will be equal to the volume of the cylinder. So from here we can find out how much is the volume of the cone. So the volume of cone will be exactly 1/3 of volume of cylinder, right? I've brought this 3 here. And volume of cylinder you already know. So this is 1/3 pi r square h. So this is the formula for the volume of the cone. So in case you forget the formula, so you can just keep this activity in your mind so that you can easily remember the formula for the volume of the cone. Yes, Mridula? Mm-hmm. Yes. Hello, Miraj. Can you hear me? Yes, ma'am. Why are you always late, Miraj? Yes, tell me. You are again 9 minutes late for this class. And then I have to repeat the whole exercise, which I have already done in previous 9 minutes, right? Yes, ma'am. But this is not right. You should be very, like you should be punctual. You should be at time. मैं भी time पे join करती हूँ. You should also try to join at time for the class. Anyway, now today, let me just very quickly revise it. So far we have already studied the volumes of these figures, right? In the previous exercises. So today we are going to start about the volume of the cone. अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी. तो विद द हेल्प, अगर हम नाउ लुक एट दिस फिगर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट क्विकली. आप ये वाला फिगर देखिए मेरा आज, ठीक है? इसमें हमने एक सिलेंडर लिया जिसका कुछ बेस रेडियस है r और सिलेंडर की हाइट है h, ठीक है? अब हमने सेम रेडियस का एक कोन ले लिया जिसका बेस रेडियस सेम है r और उसकी हाइट भी h है. तो हम देखना चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है कोन का. तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम कोन को एक बार फिल करेंगे किसी लिक्विड से और हम सिलेंडर में डालेंगे, ठीक है? तो सिलेंडर एग्जैक्टली 1/3 फिल होगा.
फिर हम एक और बार कोन डालेंगे तो 2/3 फिल होगा, और 3 बार जब हम कोन को फिल करके डालेंगे तो एग्जैक्टली आपका सिलेंडर पूरा फिल हो पाएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि जब हम लाइक 3 टाइम्स अगर हम कोन फिल करेंगे तब आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर आ पाएगा, राइट? यस मिराज, प्लीज अनम्यूट योर माइक. Ma'am, All of you unmute your mic. This is really bad. I'm So from already here, unmuted. okay, fine. So from here, we can find out what is the volume of the cone. So I've brought this 3 here. So 1/3 times volume of cylinder, and volume of cylinder you already know. So this is the formula 1/3 pi r square h, which you have to remember. And in case you don't remember, just ये आप activity को याद करिएगा अपने mind में, so that you can easily write the formula. Okay? Yes. Okay, now I'm going to start with the exercise. Okay, exercise 13.7, question number 1. Find the volume of a right circular cone. Right circular cone मैंने आपको बताया था क्या होता है? Do you remember? Any confusion to anybody? What is a right circular cone? Please tell me. Hamna. Yes, Mridula. Please speak up. ओके मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए कोन क्या होता है, लाइक एक कोन ये भी है, राइट? यस मृदुला, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. This is also a cone, right? Now this can also be a cone, isn't it? Yes, ma'am. राइट हम ना ऐसे अलग अलग कोन्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो जिस कोन में आपका ये वाला लाइक जो सेंटर है, सेंटर ऑफ बेस, और ये जो वर्टेक्स है, तो इफ यू जॉइन द वर्टेक्स विद द सेंटर ऑफ बेस, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। तो सच कोन इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन, राइट? तो हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं कोन के लिए, वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का और कर्व सरफेस एरिया का, वो सब राइट सर्कुलर कोन के लिए पढ़ा है। इस कोन के ऊपर वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, राइट? यस Miraj? Yes, ma'am. Okay, so those formulas are only applicable for a right circular cone. Now first question, find the volume. A volume though you can easily find it out. You know the radius, which is 6 centimeter, and then you know the height, which is 7 centimeter. Now what is the formula we have just studied? Volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. So just put the values. Pi आपको exercise में given है 22/7 आपको use करना है, and then r is 6 into 6 into height is 7. Now Miraj, you will tell me the answer very quickly. Yes Miraj, what are you getting? 264. How much? 264. Yes, ma'am. Okay, centimeter cube. Yes, Hamna, are you also getting the same? Yes, ma'am. All right. Second part. चलिए आप खुद से करिए second part. I'll ask the answer.
So second part, your radius is 3.5 centimeters and height is 12 centimeters. Now volume is equal to, again, 1/3 pi r square h. Put the values. 1/3 into 22/7 into 3.5. So that means 3.5 into 3.5 into 12. Now 1/3 into 22/7. So I'm removing the decimal first. 35/10 into 35/10 into 12. Now you can simplify it a little bit. So 7 into 1 and 7 into 5. And yeah, 5 into 1, 5 into 2. So 2 into 11. And then 3 into 1, 3 into 4. And what else? So I'm getting 44 into 35 divided by 10. So you can multiply this. Mridula, tell me how much you will get here. 45 into 35, 44 into 35. I'm 38.5. 38. Yes, ma'am. I'm 38.5. Is this correct? 38.5. This is what you're saying? Yes, ma'am. Okay. Centimeter cube. So this is the answer. Ma'am. Yes, Mridula. Ma'am, I think you are getting wrong because ma'am, I've seen the answer sheet. Ma'am, first part is correct. Ma'am, second part is 154 centimeter cube. Okay, इसको multiply करके check कर लेते हैं. Just 44 into 35, right? 5 into 4 is 20. Then 5 into 4 is 20 and 22. 3 into 4 is 12. Carry 1. 0, 4, 5. This is I'm getting. और फिर एक 0 से एक 0 कट जाएगा. So I'll get 154. Is this the answer? Yes, ma'am. Okay. Have you written? Yeah. Should I start the next question? Yes, ma'am. Okay. Now find the capacity in liters. Okay, अब देखो इस question में liters में convert करना पड़ेगा of a conical vessel. So the first part, radius is 7 centimeter, and now you are giving the slant height L, which is 25 centimeters. Fine. अब क्या निकालना है? Capacity. That means volume. And you know the formula, 1/3 pi r square h, right? So you know pi, you know r, but you don't know what is h. So the first step is to find what is the value of h. तभी capacity निकाल सकते हैं. अब h निकालने के लिए क्या करेंगे? We will use this information, slant height. You already know the formula. What is slant height? L is equal to square root of h square plus r square. Right, Miraj? Yes, ma'am. Okay, so L square is equal to h square plus r square. So your h square will become L square minus r square. So this will become 25 whole square minus r is 7 whole square. और अगर हम h लिखेंगे तो that means square root of it. ठीक है, तो h हो जाएगा कितना? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 I think, right? परफेक्ट स्क्वायर्स थोड़े याद रहने चाहिए. 7 का होता है 49. Am I correct? Is it 625? Yes, ma'am. Okay. So 625 minus 49 कितना आएगा? चलिए बताइए. So your 15 minus 9 is 6, right? Now here 1 बचेगा, तो 11 minus 4 is how much? 7, और यहाँ बचेगा 5. अब 576 किसका स्क्वायर होता है? It's a perfect square of some number. I think 24 का होता है. Please check quickly. 24 into 24.
Yes, ma'am, it's 24. Right? Yes. So you will get 24 centimeters. तो height निकल गया. ठीक है, आप capacity निकालिए. Again, your capacity is equal to 1/3 pi r square h. So put the values. So 1/3 into 22 by 7 into r, 7 into 7 into height is 24. Now just simplify this. So 1717 will go out and 3 into 1, 3 into 8. तो कितना आएगा यहाँ पर? So I'm getting 22 into 7 8 का कितना होता है? 56, right? So you multiply this and tell me. Miraj, what will you get? Tell me. $1,232. Numbers में बताइए क्या? 1 2 2 3 2 3 2. Okay. Centimeter cube, because everything is given in centimeters. चलिए अब इसको लीटर में करना है तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. मीटर क्यूब. So 1 2 3 2. This we have already done. Now 1 centimeter means 1/100 meters, right? और इसका क्यूब. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. So okay, अब इसको ये wait. Now this answer is in meter cube क्योंकि हम already कर चुके हैं. अब इसको लीटर में करने के लिए क्या करेंगे? Again we have to remove this meter cube, right? चलो फिर से देखो कैसे क्या लिखेंगे इसको बताइए. How should I write it? Now हमने कल परसों भी पढ़ा था that 1000 liter is equal to 1 meter cube. यही पढ़ा था. Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि 1 मीटर अगर ऐसा एक क्यूब है जिसकी तीनों साइड 1 मीटर की हैं तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है या लिक्विड आ सकता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. चलिए यहाँ से वैल्यू निकालनी है मीटर क्यूब की. तो ये तो ऑलरेडी गिवन है. 1 मीटर क्यूब इज ऑलरेडी गिवन विच इज 1000 लीटर. सो यू सिंपली पुट इट हियर. सो 1232 into this 1/100 का क्यूब अभी ऐसे रखो and into now this meter cube will become 1000 liters, right? Now the answer is in liters. ठीक है, अब just आप उसको कैंसिल कर दीजिए अपने जीरोस को. So you will get 1232 into अब था 100 का क्यूब मतलब 6 जीरो आ जाएंगे, राइट? तो 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ओके आपके पास बचेंगे 3 जीरो लीटर्स. ठीक है, so just put 1.232 liters is the answer. Any problem? Yes, Hamna, any problem? No, ma'am. In this chapter कोई इतना मुश्किल नहीं है. ये बस कैलकुलेशंस में आपको अच्छे से करना है. ठीक है, you have to be slow at your calculation. कोई जरूरी नहीं कि बहुत स्पीड में करना है. Do it slowly but do it correctly. Okay, next. So next part I'm leaving for you that you can do, right? Same. इसमें बस radius given था और इसमें height given है. So you can just find the slant height, right? I mean slant height given है. You can find the radius. Can you do it? Yes, ma'am. Fine. Now we will do question number 3. The height of a cone is 15 centimeter. Now height is 15 centimeter. If its volume is this, the volume is given 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. Okay. Now volume, that means 1/3 pi r square h is already given, which is 1570 centimeter cube, right?
and you have to find the value of r. So r square will become 3 into 1570 and divided by pi into h, right? अच्छा, अब देखिए, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ये h किस में था? देखो, ये h था सेंटीमीटर्स में, राइट? एंड यू हैव सेंटीमीटर क्यूब इन द न्यूमरेटर. तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर हियर एज द यूनिट. इज इट करेक्ट? यस. यस मैम. हाँ, अब सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आना चाहिए क्योंकि अभी आप आर स्क्वायर निकाल रहे हैं. अगर आप खाली आर निकालते तो इधर यूनिट सेंटीमीटर आनी चाहिए थी. सो कीप दैट इन माइंड बिकॉज यू हैव एन आर स्क्वायर हियर. अब जब आप उसका अंडर रूट लेंगे तो आपकी यूनिट फिर सेंटीमीटर बचेगी बिकॉज यू हैव टू गेट योर आर इन सेंटीमीटर्स, राइट? ओके, चलिए नाउ पुट द वैल्यूज. सो 3 into 1570 डिवाइडेड बाय, अब पाई क्योंकि गिवन है 3.14 यूज करना है, सो आई एम यूजिंग 3.14 into h which is 15 and centimeter square. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. So I'll remove the decimal first of all. 3 into 1570 divided by, so 314 and I'll put 100 and into 15 centimeter square. ठीक है? चलो, now simplify this. So 3 into 1, 3 into 5. Okay. Now 5 into 1. इसको करेंगे. 5 into 3 is 15. 5 into 5, 20. 314. Okay, now 314 will get cancelled out. So I'm getting 100 centimeter square as my r square. So that means r is equal to square root of 100 centimeter square, right? So this will give me r is equal to 10 centimeters. Can you scroll it up? Yes. Don't write this here, write it in the next step. Yeah, ठीक है, because वहाँ पे हमने ऐसे दिखाया तो next step में फिर हम centimeter square लिखेंगे. Scroll it down. Okay, next question. Yes, written? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi, ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है? 48 pi centimeter cube and height is 9 centimeters. Find the diameter of its base. तो diameter मतलब पहले radius निकालना है, right? उसको डबल कर देंगे बाद में. So you have to find radius. अब क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम का लिखेंगे. Like we will make use of this information. So this means your 1/3 pi r square h is given to be 48 pi centimeter cube. Yes? Yes ma'am. अच्छा, तो ठीक है, तो ये पाई से पाई तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से. एंड यू हैव टू फाइंड आर. ओके, ये हाइट भी अब क्योंकि सेंटीमीटर में था तो वी कैन राइट इट सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर. चलिए, सो आर स्क्वायर विल बिकम,
अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कट जाएगा तो यू विल बी लेफ्ट विद सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन एज द लास्ट क्वेश्चन. सो 3 into 48 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा h ओनली, राइट. अब बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 3 into 48 and divided by height is 9 centimeter square. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 into 1, 3 into 3 and 3 into 1, 3 into 1 is 3, 18 में कितना होगा 6. So you'll get 16 centimeter square. So ये क्योंकि r square है, so this implies that r is equal to square root of 16 centimeter square. So that means r is 4 centimeter, right? And therefore diameter कितना हो जाएगा? Diameter is equal to 2 into r. So that means 2 into 4 centimeter, which is 8 centimeter. Diameter of base. Has Hamna any problem? No, ma'am. Okay, let's do the next question then. Okay. Now a conical pit of top diameter. So the diameter is given, which is 3.5 meter, or diameter of top you can write. इसको ठीक पूरा लिख लेना, ठीक है? Diameter of top. So that means your radius of top कितना आ जाएगा? Radius of top, which you are calling r, which is equal to 3.5 divided by 2 meter. ठीक है, I'm leaving it in fraction. And pit is 12 meter deep. So the height of the pit is 12 meter. What is the capacity in kiloliter? अब ये conversion तो हम बाद में करेंगे. First we will find what is the capacity, right? So capacity means volume, which is 1/3 pi r square h. Now let us put the values. 1/3 into 22 by 7 into r is 3.5 divided by 2. So 3.5 by 2 into 3.5 by 2 into h is 12. Right, let us remove the decimal first. Into, so 3.35 divided by 2 into 10 I'm writing. Similarly 35 divided by 2 into 10 and into 12. Now let us try to cancel out. So this is 7 into 1, 7 into 5, 35. Now 2 into 1, 2 into 6. Okay, now 2 into 1, 2 into 3. Fine. अब ये 3 से, okay, sorry. तो ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा. तो कितना बचा? आई एम लेफ्ट विद 22 into 5 into 35, right? Yes, and divided by 10 into 10. अच्छा, ये भी और सिंपल हो सकता है. So 5 into 1 and 5 into 2, right? Now 2 into 1, 2 into 11. And similarly, this is 5 into 2 and 5 into 7. So I'm getting 77 divided by 2, which is equal to how much? 2 into, अच्छा इसको अभी फ्रैक्शन में ही रहने दो, या एज यू विश कर सकते हो. चलो कर लो, इसको डिवाइड कर लो पहले. 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 2 into 3 is 6. देन अगेन 2 into, ओके ये हो जाएगा 17. So 2 8s are 16.
38.5 meter cube, right? Okay, यहाँ तक लिखो, then I'll do the conversion. Yes, written up till here. Hamna. Yes, ma'am. Mridula, have you written? Yes, ma'am. Miraj, have you written? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको आपको क्वेश्चन में बोला है कि किलो लीटर्स में आपको आंसर देना है, ठीक है? अगेन वी विल राइट द कन्वर्जन. क्या था हमारा कन्वर्जन? दैट 1000 liters is equal to 1 meter cube, right? So we have to change this meter cube from here. So you simply multiply this by 1000. So मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ. Okay, so this या इसी को लिख लेते हैं आगे. So that means 38.5. अब इस मीटर क्यूब की जगह I'll write 1000 liters. Yes? Yes, ma'am. ठीक है. अब किस में चाहिए आंसर? किलो लीटर्स में. किलो लीटर्स. किलो लीटर मीन्स like 1 liter into 1000. Like 1000 liter मिलकर 1 किलो लीटर बनता है. Is this correct? I mean, is this clear? Yes, ma'am. हाँ, तो 1000 you can just write it down. अभी साइड में लिख सकते हैं that 1000 liter is equal to 1 किलो लीटर. जब किसी भी क्वेश्चन में किलो आता है तो उसको that means 3 zeros से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? चलिए, किलो लीटर्स. अब यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव 1000 लीटर, सो इस 1000 लीटर को हम 1 किलो लीटर लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 38.5 किलो लीटर्स. सिंपल. Okay, next question now. Now, question number 6. The volume of a right circular cone is given. So, volume is given, which is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, so your diameter of base, which is 28 centimeter. So that means your radius of base कितना आ जाएगा? Radius of base, which we are using R in the formula, which is 28 divided by 2, which is how much? 14 centimeter. Okay? Now find the height of the cone. First thing. Height of the cone तो volume के formula से आ जाएगा. So V is equal to how much? 9856 centimeter cube, right? So that means 1/3 pi r square h is equal to 9856. Now, from here, you can find the value of h. अब फिर से चलो मैं okay, h is equal to 3 into 9856 and divided by pi into r square, right? Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए ये जो था सेंटीमीटर क्यूब में था, राइट? दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पर
क्योंकि आप सिंपल h निकाल रहे हैं तो आंसर में सेंटीमीटर आना चाहिए, राइट? तो आप डिनोमिनेटर में देखिए, यू हैव r स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब जो आपका आंसर आएगा फाइनली इट विल बी इन सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. So 3 into 9856 and divided by pi is 22 into 7 and into r square, which is 14 into 14. So now the answer is in centimeter. Now just cancel it out. So 7 into 1 and 7 into 2. Now 2 से इसको करो simple. 2 into 1 and 2 4 is 8. 18 हुआ तो 2 into 9. 22 4. Okay. चलिए फिर से करिए. ये 11 टाइम गया 2 से और फिर ये गया 2 into 2. 2 4 is 8. 12 6. ठीक है. अब इसको करिए. So 2 into 7 and 2 into 1, 2 into 2, 3, 2, right? अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, चेक इट. 7 into 1 7 चलेगा, बचेगा 53. 53 में जाएगा 7 into 7 is 49, बचेगा 4 42. Yes, okay, it can be divided by 7. So 7 into 1 and then 7 into 1 is 7. कितना बचा 5. 53 हो गया इधर. 53 में जाएगा 7 into 7 49, फिर बचेगा 4 42 हो जाएगा, तो 7 into 6 is 42, right? अब 11 से चेक करो. yes, so 11 into 1 and 11 into 1 is 11 और यहाँ बचेगा 6. 66 हो जाएगा तो 16. ठीक है. so I'm left with 3 into 16 only. 3 into 16 centimeter, which is equal to 3 6 कितना हुआ 24. No, sorry, 18. 3 into 6 is 18 and then 1 48 I'm getting. Is this correct? Please check in your book. Yes, it should be correct. Calculation तो हमने ठीक किया है. Yes, ma'am, it's correct. Okay, so I'm getting 48 centimeter as my height. Yes, Mehraj? Yes, ma'am. ठीक है. Height आ गया. Now next thing you have to find the slant height. Slant height तो अब निकल सकता है, ठीक है. R भी पता है और H भी पता है. इसको लिख लिया. Should I move? Yes, please note it down. Yes, Mridula, have you done? Yes, ma'am. Okay. Next, you have to find slant height. Now, slant height, L, which is equal to square root of H square plus R square. Okay, put the values. So, square root of H is 48 and R is how much? कितना था radius? 14. Okay, centimeters. अब ये तो multiply करना पड़ेगा. Now, Miraj, you will tell me how much is 48 whole square. And Mridula, tell me 14 whole square. 196 centimeter square. चलिए ये आ गया 196. चलिए मेराज बताइए हाउ मच इज 48 होल स्क्वायर. कितना बोला था मृदुला? 196. Yes, ma'am. ओके. यस मेराज, हाउ मच इज 48 into 48? 2304. Say it louder. 2304. 2304. ओके, ठीक है. नाउ यू एड इट.
So this is square root of. Now 4 and 6 is 10. Then again 9 and 1 is 10. And 50. 1, yeah, 2 and 5. Yeah, okay. Centimeters, ठीक है. And I'm getting 50 centimeters. Yes, this is easy. इसको आप break भी कर सकते हैं. You can write it to 25 into 100 centimeter. ठीक है. So that means अब इसका अगर आप square root लेंगे. Yes, Miraj, can you do it now? So 25, basically you are getting 5 into 5 here, and 100 means 10 into 10. So you make pairs, and this will come out to be एक 5 बाहर आएगा और एक 10 बाहर आएगा, and you will get 50 centimeters as your slant height. Right? Yes, Amna? Yes, Amna, are you here? Yes, ma'am. Fine. अब चलो third part कर लेते हैं. You have to find the curved surface area of the cone. Yeah, what is the formula for the curved surface area of the cone? Mridula. Miraj, what is the formula? ये तो हम कर चुके हैं. Curved surface area of cone. Hamna, what is the formula? Ma'am, pi r l. Pi r l, yes. ठीक है. ऐसे माइंड में रखो, कोन के लिए जब हम कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो हम स्लांट हाइट हमें यूज करना है, इसीलिए सेकंड पार्ट में उसने स्लांट हाइट कैलकुलेट करवाया आपसे, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट इन द थर्ड पार्ट, राइट? पाई आर एल. चलिए, पुट द वैल्यूज हियर. 22/7. How much is r? 14, right? Yes, ma'am. Okay, l अभी निकाला है 50. चलो सिंप्लीफाई करो इसको, ये तो बस इतना ही होगा. 7 into 1 and 7 into 2. So I'm getting 2200. yes 44 into 50 आएगा and 2200, right? सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना ही आ रहा है ना? 4 ठीक लिखा है मैंने? 5 नो, कुछ गलत लिखा है शायद. नो ठीक है. No, it's correct. Okay. Next question. Miraj, are you done with your test? Are they over? Yes, ma'am. Okay. And when are you having the next exams? They are starting from 20th February. Your final examination. Yes, ma'am. Okay, 28th February. And Ridula, what about your exams? Ma'am, no, I don't know, ma'am. Our school is not updated. अच्छा, तो अभी तक आपका क्या क्या हुआ है स्कूल में? कौन कौन से टेस्ट हो गए? Ma'am, only half yearly. Only half yearly are done. Okay. Let me just note it down. Miraj का है 23rd Feb से final exams. Okay, Hamna, what about you? Ma'am, from Ma'am, I don't 20th. know. 20th. Okay. Yes, ma'am. Hamna, what about yours? Ma'am, I guess it's starting in March. March. Okay, वही I mean February end या March में होगा, है ना? तो अभी उससे पहले कोई टेस्ट नहीं है आपका स्कूल में? No, ma'am. अच्छा. So I think before 20th Feb we will able to finish the syllabus as Miraj is having exams. अभी तो 2-3 chapters ही बचे हैं, है ना? एक probability is remaining and then construction chapter is remaining and I'm just wondering कि construction को मैं कैसे कराऊं. Okay, I'll think about it. चलो anyway अभी तो इसको पूरा करते हैं. So next question, yes. Okay, what is it saying? The right triangle ABC. Right triangle means you have a triangle like this. It's a right angle triangle. ठीक है? With side 5 centimeter, 12 and 13. अब ये आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड होगी, because Pythagoras theorem से this side will be 13 and this is 12 and this is 5, right?
This much you should know. ऐसे कुछ भी साइड कहीं पर भी नहीं लिख देना है. Because it's a right angle triangle, so the Pythagoras theorem is applicable on this triangle. So that means 12 square plus 5 square will be equal to 13 square. So that means 13 is the hypotenuse. And obviously एक side छोटी है तो वही 5 सेंटीमीटर की होगी और बड़ी वाली side 12 सेंटीमीटर की होगी, right? ठीक है. Now is revolved around the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो ये कह रहा है कि इसको हमने रिवॉल्व कराया. कैसे रिवॉल्व कराया? लेट्स से कि कुछ इस तरह से किया कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इसको ग्राउंड में कहीं फिक्स कर दिया ऐसे, और फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ के इसको ऐसे घुमाना शुरू किया, राइट? तो अब कैसा फिगर बनेगा? इट विल बी अ फिगर लाइक दिस. यस मेराज? तो इट विल बिकम अ कोन. अब क्योंकि 12 सेंटीमीटर की हाइट को फिक्स किया था, सो दैट मीन्स ये जो हाइट ऑफ द कोन होगा दिस इज 12 सेंटीमीटर. यस मृदुला? यस मैम. ठीक है. और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम रहेगा हर तरफ, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट मीन्स योर रेडियस ऑफ द बेस विल बी 5 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड अब ये 13 किधर जाएगा? इट विल फॉर्म दिस साइड. यस. सो दैट मीन्स योर स्लांट हाइट L which is equal to 13 सेंटीमीटर. इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके. सो बेसिक अब इसको थोड़ा सा लिख लेंगे. द फिगर so obtained will be a cone, right? Will be a cone of, अब इस कोन में सब लिख लेंगे क्या क्या होगा, which is the radius is 5 सेंटीमीटर, या पूरा लिखो इसको, radius of base, radius of base which we are calling small r, which is 5 centimeter, and height which we are calling h, which is 12 centimeter, right? And slant height which we are calling L, which is equal to 13 centimeter. तो यानी कि जब अगर हमने इसको ऐसे रिवॉल्व किया तो जो फिगर बन के आएगा दैट विल बी अ कोन जिसकी ये डायमेंशंस होंगी. तो दिस वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. अब इसका वॉल्यूम निकालना है. सो नाउ दिस इज इजी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन? यस, इस सिलेंडर का 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच. प्लीज रिमेंबर इट. Just put the values. 1/3 into 22/7 into radius is 5. So 5 into 5 and height is 12, right? So just simplify this. 3 into 1 and 3 into 4. और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें. So this is 20. अच्छा इसको करो, 88 हो गया ये 4 से मल्टीप्लाई करके, and 5 into 5 is 25 and then divided by 7. Now चलिए बताइए कितना आएगा ये 88 into 25. Mridula, tell me. मैम 2200. 2200. ठीक है, हम अज्यूमिंग कि आपने ठीक ही बताया है. नाउ डिवाइडेड बाय 7. चलिए इधर करके देख लेते हैं. 2200 वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट एनीवे चलो 7 से करो इसको. तो 7 into 3 is 21, right? So 10. 7 into 1 is 7. So 3. Now 7 into how much? 4 is 28. So I'm getting 2. Okay, now put a point and then 0. So 7 into 2 is 14. And then कितना बचा यहाँ पे? 6. 60. 7 into 7, 8 is 56. So up to 2 places of decimal I'm writing. So 314.28 centimeter cube.
आप आगे भी देख सकते हैं, अगर कहीं जाके आपका पूरा हो रहा है तो कितना बचेगा 440, नहीं ये चलता रहेगा, तो यू कैन लीव इट अप टू 2 places of decimal. Yes, please note it down. Should I scroll it? You can also draw the figure in this question. ये जो cone आपने बनाया है ना, this you can make. For your understanding, you can do it. This is the triangle. ये आपका right angle triangle था, इसको आपने yes, written all of you. Yes, ma'am. Next question. Now, what is the question saying? If the triangle ABC in the question number 7 above, okay, is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. अच्छा, अब की बार क्या किया है, फिर सेम ट्राइंगल लेना है. लेट्स से कि देखते हैं कैसे बनता है ये. फिर से हमने यही वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है. इसमें ये वाली साइड थी 5 सेंटीमीटर और ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 13 सेंटीमीटर, ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन में हमने 12 सेंटीमीटर साइड को फिक्स किया था और इसको ऐसे घुमा दिया था, तो ये कोन बन गया था. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स करके इसको रिवॉल्व करना है. फिर से कोन बनेगा, बट अब कैसी शेप का कोन बनेगा, देखिए ये वाली साइड आपने फिक्स की है. यस, हम ना, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर साइड, राइट. अब आप इसको अगर घुमाएंगे ट्राइंगल को, तो ये आपका रेडियस का काम करेगा. जस्ट वेट. सो बेसिकली ये ऐसे एक सर्कल यहाँ पे फॉर्म होगा जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा, राइट हम ना. एंड ये वाली जो होगी, दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन. ये वाली साइड कौन सी थी ट्राइंगल में, 13 सेंटीमीटर. सॉरी, द स्लांट हाइट. स्लांट हाइट तो स्लांट हाइट ही रहेगी, बट दिस टाइम अब कोन को थोड़ा आपको ऐसे घुमा के देखना पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द कोन and this 12 centimeter, this is this time the radius of the cone. Is this figure clear? Yes, ma'am. तो ये आपका ऐसे लाइक साइड से देखना पड़ेगा आपको इस फिगर को. तो इसमें ये बेस बना, जिसका बेस का रेडियस बनेगा 12 सेंटीमीटर और इस बार इसकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर. सो दिस फिगर यू हैव टू ड्रॉ, वरना समझ नहीं आएगा क्या किया है. प्लीज ड्रॉ दिस फिगर. ऐसे पहले ट्राइंगल बनाना और फिर ऐसे इसको फिगर बनाना, और ये लिख लेना लाइक which is R and which is H in this figure. So similarly we will write the figure so obtained will be a cone of, अब उसका dimensions लिखिए. So this time your radius of base, which is small r, this is 12 centimeter this time, and the height which is h, small h, which this time it is 5 centimeter, and slant height तो same ही रहेगी, which is small l, which is equal to 13 centimeter, right? तो इस बार ये शिफ्ट हो गया रेडियस और हाइट. नाउ अब आगे बोल रहे हैं ये, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. सो सेम फाइंड द वॉल्यूम, which is 1/3
by r square h. So 1/3 into 22 by 7 into r, this is 12. 12 into 12 into height is 5. अब ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. यस, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा. You will have to do the calculations in this case. अच्छा, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं. वेट, अगर इसको हम नहीं निकालना पड़ेगा, because in the first part it is saying that find the volume of the solid so obtained, right? So कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको पूरा, वरना मैं सोच रही थी कि जब रेशो निकालेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे, बट दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बेसिकली इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम, so you will have to do the calculation complete. Okay, now who will do this calculation? Please tell me, I'm not doing it. इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है. 3 into 1 and 3 into 4 is 12, right? Everybody is silent now. Nobody is speaking. चलो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ. 22 into 12 and 4 into 5 is 20 divided by 7. चलो अब तो करो, थोड़ा सिंपल लग रहा है अब तो ये. Now 22 into 12 करिए पहले जल्दी से. How much is 22 into 12 हमना? 264. 264 into 20, right? Divided by 7. तो अब तो ये इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. Just put 1 0 first and 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 into 2 is 4 divided by 7. Now इसको डिवाइड करिए 7 से, तो मैं तो यहीं पे कर रही हूँ. So I'm getting 7 into 6 is 42. ठीक है, बचा 4 48. 7 into 48 में फिर से 6 टाइम जाएगा, 42 बचेगा 6. 60 हो गया. 60 में जाएगा 7 8 56, बचेगा 40 में जाएगा 7 5 35, फिर बचेगा 50. 7 into 6 is 52. So 668.56 centimeter cube. I'm getting the volume in this case. Right? Ma'am, I guess it is 5280 and not 4680. Sorry, please say again. Ma'am, 264 into 20 is 5280. तो ये आप लोगों ने गलत बताया. कितना आया? 5280. Yes, ma'am. ठीक है, चलो दोबारा से करो, कितना आएगा अब ये. So 7 into 6 is 42. 7 into 7 जाएगा इसमें 49. बचेगा 38 में जाएगा. 7 into 5 is 35. And then again 330 हो गया. 30 में गया 7 into 4 28. Then 20 बचेगा. 7 into 2 14. बचेगा 60. 7 into 8. So this I'm getting this time, right, up to 2 places of decimal. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. चलिए अब आगे क्या था इसमें? Find the ratio of the volumes of the two solids obtained in question 7 and 8. Yes, can you see this? Find the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 6. अब रेशियो निकालने के लिए देखिए, आप डायरेक्टली जो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है ये डेसिमल्स में, आप डायरेक्ट इसको रख के रेशियो निकाल सकते हैं, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा, लाइक कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. यस मिराज? देखिए, Yes, ma'am. जस्ट सी व्हाट आई एम सेइंग. अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम आई थी, क्वेश्चन 7 की वॉल्यूम और फिर क्वेश्चन 8 की जो वॉल्यूम थी, उन दोनों का रेशियो निकालना है, राइट? तो क्वेश्चन 7 की वॉल्यूम कितनी आई थी? ये 314.28 सेंटीमीटर क्यूब. और अभी हमारा कितना आया है? 754.28. 754.28 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? तो आप ऐसे डायरेक्टली ये रख के भी निकाल सकते हैं, और आप इसका वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकते हैं. लाइक इट्स योर विश, बोथ वेज आर करेक्ट.
रेशो में कैसे निकालेंगे? या अच्छा ऐसा करो, ऐसे ही निकाल लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली ना ऐसे भी निकाल सकते हैं। लाइक रेशो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप वॉल्यूम लिखेंगे, सो 1/3 पाई, उस केस में रेडियस कितना था ये बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस कितना था? 5। और हाइट था कितना? 12, राइट? हाँ, और इस केस में 1/3 पाई, अब योर रेडियस 12 स्क्वायर हो गया और हाइट हो गया 5। तो ये वाला पार्ट तो ये वाला ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 5 × 5 × 12 डिवाइडेड बाय 12 × 12 × 5, राइट? अब एक 5 से 5 कैंसिल हो गया और एक 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 5/12। सो isn't this calculation simple? Like 5/12, यही आ रहा है आंसर बुक में? यस मैम। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी ट्राई करके देखना कैलकुलेशन, डायरेक्टली जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया था उसी को डालना रेशो में, और फिर whichever way you find is easier you can do it. Yes मेराज? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही रेशो होगा, राइट? 5:12 is the answer because 5 is a prime number here. Okay, one more question is remaining. I think we will do that in the next exercise or next class, I mean. Fine? Okay. Okay. Okay, let's end the class today. Thank you, ma'am. Okay, good night. Thank you. Thank you.